So the creepy thing when I got to know that I'm gonna be a dad, the first thing which came to my mind was कि crap यार अभी तो मैं उसकी नैपियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकता. पहली दफ़ा तब अंदाज़ा हुआ था जब नर्स ने ला के बेटे को मेरे हाथ में दिया था और एक ऑकवर्ड सी स्माइल ली थी कि जिस तरह कोई पैसे मांग रहे हो. तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत हुआ था कि यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. और मतलब वो छोटा सा गोल गोल जो बच्चा होता है उस टाइम, मतलब वही पॉइंट था. तो अभी मुझे आई हैव टू डू समथिंग. सो एक्चुअली आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि आई हैव टू बी मोर focused in my life, and then that's the moment when I started doing things here and there. So you know, you realize it every day. There's no set moment that you know, you come to terms with the fact that, oh, you know, I'm a father. From the time that, you know, your kids are born to every single day that you come back home, there's something new that you learn every day. And there are times when, you know, you come to terms with it, there are times when you don't come to terms with it, but every single day you realize that, oh, I'm a father. So I think they were like 40 days old or 45 days old, and I asked my wife to, you know, watch an episode of Modern Family. It's hardly a 20 minutes episode, and it took us 4 days to, you know, complete the episode, and we didn't laugh at all, and it's our favorite show. So I think that was one moment when I realized, oh crap, I'm a dad. I won't be able to enjoy any more movies or seasons or anything, but yeah, I love them though. So usually I come home late, so that is almost the time when my son is about to sleep. So the moment I enter my room, तो मेरी बीवी कर रही होती है, and then I'm like आहिस्ता 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 सब कुछ, because the moment he sees me he is like पापा, and उसके बाद 2 घंटे गए. So we have to be very careful with that. हमें देखना पड़ता है कि यार नहीं. और अगर उस टाइम मैं लेट हूँ, 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जैसे ही मैं सोने लगा हूँ उसी वक्त बलाज गॉट अप. So I played dead totally. मैंने कहा कि मैं नहीं उठ रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. मेरी बीवी ने मुझे उठाने की कोशिश की लेकिन I was nowhere there. तो I slept. जो वो करना है उसने करे, मुझे सोना है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है. थैंक यू, गुड नाइट. मुझे पापा बने ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने के अंदर एक मोमेंट से तो कई ज़्यादा रोज़ मतलब बच्चा उल्टी कर देता है, पॉटी करता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई है. मतलब हर सेकंड मेरे लिए एक हिलेरियस सी चीज़ हो रही होती है. So every day is a new adventure. You know, every day something happens that, you know, makes you laugh out loud, or you know, when you think back you're like, oh, how did this happen? But very recently this little one wakes me up, and you know, she wants to do up my hair, and you know, I become her subject. She puts these clips on me, खुद अपने clips उतारती है और मेरे ऊपर डालती है. So I didn't know. I was sleeping in late और मेरे सर पे 2 पिंक कलर के और एक येलो कलर का क्लिप लगा हुआ था, और मैं बाहर निकला और मैं बहुत एक सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहा था बाहर. जो 2 पेंटर्स आए हुए थे हमारे घर पेंट करने, और वो मेरी तरफ देख के हंसी जा रहे थे. So I didn't know what they were laughing at, and when I went back, you know, and I saw I had these clips on my head. So yeah, you know, that's one of the funnier ones. So we have been hearing कि बच्चे जो देखते हैं वो ही करते हैं. So that is true in my case actually. So हम लोग अक्सर लोगों को कहते हैं, या घर में भी कोई बात होती है, या मैंने अपने छोटे भाई को कुछ भी कहना होता है, किसी बात पे नसीहत करनी होती है, या किसी चीज़ से रोकना होता है, तो we usually say कि we call his name and then say कि बंदा बन जा. So this one day बलाज कुछ शरारतें कर रहा था, तो मैंने उसको ऐसे थोड़ा सा पैट किया और मैंने कहा कि यार, मैंने कहा बलाज अगर आपने अब किया ना तो आपको मार पड़ेगी. सो ही टर्न्ड अप टू मी, ग्रिन्ड एंड ही सेड पापा बंदा, यानी कि आप बंदे बन जाओ. सो दैट वाज द मोस्ट हिलेरियस मोमेंट इन माय लाइफ अप टिल नाउ. आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी नेक्स्ट, बट या एडवाइस
I think ये वाला ही है. So my dad has been very much supportive with me in every aspect of my life, in my highs and lows, everywhere he's been with me. So when my wife was pregnant, so the first night she got a cake. So I'm very much अगर मैं मेरे बेड पे कोई थोड़ा सा भी हिले, मेरे कमरे में कोई एंटर हो, मुझे खड़ा होकर कोई देख रहा हो, मैं सो नहीं सकता. I wake up. So वो जैसे ही थोड़ा सा हिली है बेड पे, I woke up और मैं बहुत तकरीबन 2 दिन के बाद सोया था because the nature of my work. और the first thing which came to my mind was कि यार वो crap कि क्या, and immediately at that moment something hit me and I realized कि यार this is the first night. अभी ये हमारी मतलब कि गोइंग टूवर्ड्स पेरेंट्स, ये हमारी पहली रात है और मुझे इतनी तकलीफ हुई है अभी. सो आई गॉट टू वरी अबाउट माई फादर एट दैट टाइम कि यार उन्होंने हम 2 बच्चों को, आई वॉज 28 एट द टाइम, माई ब्रदर वॉज 25, उन्होंने इतनी देर तक लिखाया, पढ़ाया, इस जगह तक पहुंचाया, हमारी शादियां की, एवरीथिंग दे डिड फॉर अस, दे नेवर आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न. So how would they have managed that? और उनको ये काम करते हुए 25-30 साल हो गए हैं और ये पहली रात है. एक दफ़ा सिर्फ ये ऐसा हो रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार ये क्या हुआ, शी waking me up. So I would say कि by becoming a father, I've become a more caring son towards my parents, especially towards my father. Because now I am a father, I know what he has been through. इससे पहले कि सिर्फ one can only listen कि अच्छा यार ये हो सकता है, इस तरह है, ऐसे. But until you go through that period, you can't estimate anything about that. ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो. और अगर दिल से भी कोई जवाब ना आए तो आंखें बंद करके अपने मामा और बाबा का नाम लेना. हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी. जस्ट किडिंग यार, लेकिन यूज्ड टू से मी कि डॉक्टर ना बनो, बेशक इंजीनियर ना बनो, but be a good human being. And I think that's the advice I want to give my kids कि अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है बंदे को. डॉक्टर और इंजीनियर तो हर कोई बन जाता है. So there are a lot of advices that my father gave me, but the single biggest thing that my father did for me was that he was there for me at every single step of the way, and he showed me how to become a better person. So I have immense respect for my father, and all the good things that I am are because of what my father has done in my life. All the bad things that I do, I constantly then think back to how my father would have handled these situations, and I revert back to trying to become a better person. So my one advice to all the fathers out there is just be there for your children. Be the example that they need you to be. You're their hero. They're going to learn from you. So especially your sons, be there for them, spend time with them, care for them, and show them what integrity is. You can't tell it to them, you can't explain it to them, you have to show it to them. For your daughters, just love them unconditionally, make them brave, make them proud of you, and empower them. There shouldn't be any set mindsets, there shouldn't be any preconceived notions. You should just be there for your children.